Very fine. So in the last lecture, we have completed our question number first and question number second. So in this lecture, we will going to continue our exercise. So open your book, page number 40. Question number 3. Read the following chart carefully. There is one chart and you have to read that chart very carefully. So look at here. यहाँ पे मैंने लिखा है chart. Read the following chart. Okay. Here are two columns. First is sentence. These are the sentences and these are the kinds, means types of sentences. Okay. So sentences. First, the students of class 4 graded their teacher. This is a sentence. And which kinds or which type of sentence is this? It is a statement. Okay. Then second is come here, Javed and Nisha. It is command or request. ठीक है, ये जो sentence पढ़ने के बाद क्या हो रहा है? Command नहीं तो request है, ऐसा लग रहा है. ठीक है. Next, what an opportunity! Exclamation. Then and should we end it with yours lovingly? Question mark. Here question पूछा गया है. That's why it is a question sentence. Means with help of this charts, you can see there are kinds of sentences in grammar. Okay, in English there are types of sentence, or we can say kinds of sentence. So there are 4 kinds of sentence. First is statements, second commands or request, third exclamations, and fourth is questions. ठीक है, sentence के kinds है, उसमें statement sentence है, command और request sentence है, exclamation sentence है, question sentence. मतलब सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें कभी कभी स्टेटमेंट होता है तो वो स्टेटमेंट सेंटेंस हो जाता है. स्टेटमेंट ऐसा होता है कि उससे हमें रिक्वेस्ट है ये पता चल रही है, कुछ ऑर्डर दी गई है, हमें कमांड दी गई है, वो पता चल रहा है, इसलिए वो क्या होता है? कमांड और रिक्वेस्ट सेंटेंस. नहीं तो कभी कभी कुछ तो भी सरप्राइजिंग चीज पता चलती है तो वो उसके बारे में बोला जाता है, तो वो होता है एक्सक्लेमेशन. कभी कभी क्या होता है? क्वेश्चन. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है एंड शुड बी एंड विद योर्स लविंगली. हम योर्स लविंगली से एंड कर सकते हैं क्या? ये क्या होगा? क्वेश्चन हुआ, इसलिए वो क्या होगा? क्वेश्चन सेंटेंस. ठीक है. सो देयर आर टोटल 4 kinds of sentences. First is statements, second commands or request, third exclamations, fourth questions. Okay, so you have to write down all this information in your notebook very carefully. Okay, so now the question is what is mean by statement. अब तुम लोग को क्वेश्चन होगा कि यार स्टेटमेंट की सेंटेंस कौन सा है, कैसे समझे. So what is mean by definition? What is mean by statements? What is mean by commands? What is mean by exclamation sentence? What is mean by question sentence? Okay, so let's discuss in detail about these kinds of sentence. Now let's discuss about the kinds of sentence. Okay, and the meaning of its sentence. What is mean by statements, what is mean by question, what is mean by command or request, and what is mean by exclamation. Okay, sentence तो है पर वो sentence statement ये कैसे हम बता सकते हैं. So let's discuss about it. First, kinds of sentence. There are 4 kinds of sentence: statements, command or request, third exclamation, and fourth question. These are 4 kinds of sentence. Now what is mean by statements? So look at here. Statements are sentences that express a fact or idea or opinion. Okay, statements are मतलब statements वो particular sentence statement ये कैसे पहचानना है हमें? How we can identify that particular sentence is a statement? Statements are जो भी statement होते हैं उनमें statement sentence
क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, उसमें कोई रिक्वेस्ट नहीं की जाती है, उसमें कुछ एडवाइस नहीं दी जाती है, ठीक है, कमांड नहीं दी जाती है, वो होता है स्टेटमेंट्स। सो एग्जांपल, पैरट इज अ ब्यूटीफुल बर्ड। पैरट इज अ ब्यूटीफुल बर्ड, इसमें कुछ क्वेश्चन है क्या? नहीं। इसमें कुछ रिक्वेस्ट की गई है? नहीं। इसमें कुछ ऑर्डर दी गई है, कमांड दी गई है? नहीं। एक फैक्ट है, एक स्टेटमेंट है, फैक्ट है, कभी चेंज होता है क्या? नहीं। पैरट इज अ ब्यूटीफुल बर्ड, यस इट इज ट्रू, इट इज अ फैक्ट that a parrot is a beautiful bird. So it is what? Statement sentence. Then the Ganga is holy river. गंगा ये जो है पवित्र नदी है, बराबर है, it is a fact है, यही सच है. So these are what? Statements sentence. ठीक है. Then command और request. इसी में आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे सेंटेंस जिसमें कमांड होती है, जिसमें रिक्वेस्ट की जाती है, वो होते हैं रिक्वेस्ट सेंटेंस और कमांड सेंटेंस. सो लुक एट हियर, सेंटेंसेस आर यूज्ड टू इशू अ कमांड और इंस्ट्रक्शन, और वी कैन से मेक अ रिक्वेस्ट और ऑफर एडवाइस. ठीक है. कमांड कुछ तो भी ऑर्डर इंस्ट्रक्शन दिए हुए होते हैं, नहीं तो कभी नहीं तो रिक्वेस्ट की गई होती है, कुछ एडवाइस दी गई होती है, वो होते हैं रिक्वेस्ट और कमांड सेंटेंस. जैसे कि प्लीज क्लोज द डोर, प्लीज ओपन द डोर, ये क्या है? एक रिक्वेस्ट है. ओके. देन सिट डाउन, ये हुई कमांड, ऑर्डर. ओके. सो एग्जांपल, पास द सॉल्ट, सॉल्ट जो है वो पास करो, मुझे दो ऐसा. देन प्लीज सिट डाउन, shut the door. So these are request sentence, command sentence. ठीक है. स्टेटमेंट सेंटेंस क्या होता है? जिसमें फैक्ट एक्सप्रेस की हुई होती है, कुछ तो भी आइडिया एक्सप्रेस की होती है, नहीं तो ओपिनियन दिया जाता है. उस सेंटेंस में रिक्वेस्ट नहीं होती है. कौन से स्टेटमेंट सेंटेंस में रिक्वेस्ट नहीं होती है, कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है, और कुछ तो भी ऑर्डर नहीं दी जाती है, फैक्ट मेंशन होता है, वो होता है स्टेटमेंट सेंटेंस. और कमांड रिक्वेस्ट, उसमें क्या होती है? कुछ तो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है, हमें ऑर्डर दी जाती है, कमांड दी जाती है, रिक्वेस्ट होती है, नहीं तो कुछ एडवाइस दी जाती है. शट द डोर, पास द सॉल्ट, पास द बॉल, ओपन द डोर, प्लीज सिट डाउन, कैन यू प्लीज हियर मी. दैट इज व्हाट? क्वेश्चन, सॉरी, कमांड सेंटेंस और रिक्वेस्ट सेंटेंस. There is exclamation. Exclamation means expression of our emotions. That is exclamation. ऐसे सेंटेंस जिसमें हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशन एक्सप्रेस हुए होते हैं, वो होता है exclamation sentence. So look at here. An exclamatory sentence is a sentence that express great emotions. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जिसमें जो सेंटेंस ग्रेट इमोशंस एक्सप्रेस करता है. कौन से? सच एज एक्साइटमेंट, सरप्राइज, हैप्पीनेस एंड एंगर. ठीक है. ग्रेट इमोशंस एक्सप्रेस होते हैं कौन से? एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, सरप्राइज एंड एंगर. ये जो एक्सप्रेशन है वो सेंटेंस में एक्सप्रेस किए जाते हैं, वो होते हैं एक्सक्लेमेशन. और एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क से एंड होता है. एक्सक्लेमेटरी मार्क कैसा रहता है? दिस इज द एक्सक्लेमेटरी मार्क. सो एंड एंड्स विद एन एक्सक्लेमेटरी मार्क. एक्सक्लेमेटरी मार्क्स जहां पे है, सबसे एंड में है जो सेंटेंस के, वो कौन सा है सेंटेंस हुआ? एक्सक्लेमेशन. एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में ग्रेट इमोशंस जो है वो एक्सप्रेस की जाती है, जैसे कि एक्साइटमेंट, सरप्राइज, हैप्पीनेस एंड एंगर. एग्जांपल, वी वोन. ठीक है. यहाँ पे पूछो व्हाट लवली फ्लावर्स, एक्सक्लेमेटरी मार्क. कितने लवली फ्लावर्स है, मतलब यहाँ पे खुशी एक्सप्रेस हो रही है. डोंट टॉक, गेट आउट. यहाँ पे गुस्सा हो रहा है, डोंट टॉक, गेट आउट. ये है exclamation sentences. Now, what is question sentence? इसी जहाँ पे क्वेश्चन पूछा होगा वो होगा question sentence. So, a sentence, phrase or word. एक sentence, phrase, नहीं तो कोई तो भी
सेंटेंस, कोई भी फ्रेज, कोई भी वर्ड्स, और डाउट्स, इंफॉर्मेशन चाहिए या तो डाउट क्लियर करना है, तो इसलिए जो पूछा जाता है सेंटेंस वो होता है क्वेश्चन सेंटेंस, एंड इट एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन सेंटेंस जो होता है उसके लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। फॉर एग्जांपल, वुड यू लाइक आइसक्रीम, क्वेश्चन मार्क, इट इज क्वेश्चन सेंटेंस। देन हैव यू एवर मेट हर बिफोर, उससे आप पहले मिले हो क्या, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में इमोशंस जो है वो एक्सप्रेस की जाती है और सेंटेंस का एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क से होता है, वो होता है एक्सक्लेमेशन। एंड क्वेश्चन, ऐसा सेंटेंस, ऐसी फ्रेज या ऐसा वर्ड्स जो कुछ तो भी इंफॉर्मेशन पूछनी है, ये नहीं तो कुछ डाउट क्लियर करना है, इसलिए बोला जाता है। और ये सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से एंड होता है, वो होता है क्वेश्चन सेंटेंस। सो दीज आर द kinds of sentence. Okay, so I am going to read this information again. You have to read this information with me. Okay, listen and read very carefully. Okay, so kinds of sentence. First is statements. So what does mean by statements? Statements are sentences that express a fact, idea or opinion. Statements do not ask questions, make requests or give commands. For example, parrot is a beautiful bird. Second, the Ganga is a holy river. Third, command or request. Second, command or request. Second sentence का type क्या है, command or request. So what is meant by command? So sentences are used to issue a command or instruction, make a request or offer advice. For example, pass the salt, please sit down, shut the door. Next is exclamation. An exclamatory sentence is a sentence that expresses great emotions such as excitement, surprise, happiness and anger, and ends with an exclamatory mark. For example, we won, what a lovely flowers, exclamatory mark. Then don't talk, get out, exclamatory mark. Then next is question. A sentence, phrase or word that asks for information or doubts and ends with question mark. For example, would you like ice cream, question mark. Have you ever met her before, question mark. So these are the kinds of sentence. You have to write all this information in your notebook and read this information very carefully. Now look at your book, page number 40. So चैट हमने पढ़ा, हमने जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस है वो डिस्कस किए. So what you have to do now, find one example of each kind of sentence from the passages you have read so far. तो इससे पहले जो कुछ भी लेसन रीड किए, जो कुछ भी रीड किया है आपने, आपको क्या करना है, हर एक सेंटेंस के काइंड्स का एक एक एग्जांपल आपको ढूंढना है, उनको लिखना है. सो दिस इज फॉर यू. आपको सेंटेंस का स्टेटमेंट क्या है वो समझ में आया, कमांड क्या है समझ में आई है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन क्या है वो समझ में आया, क्वेश्चन क्या होता है वो समझ में आया. सो यू हैव टू राइट डाउन one example of each in your notebook. Now fourth is, note that each kinds of sentence can be either positive or negative. ठीक है, तो जो कुछ भी सेंटेंस होते हैं वो कहीं नहीं पॉजिटिव होता है, नहीं तो नेगेटिव होता है. एग्जाम्पल,
The cuckoo is a lazy bird. Cuckoo is a lazy bird. ये क्या है? पॉजिटिव है. And the cuckoo is not a lazy bird. ये हुआ नेगेटिव. इसमें नॉट आया इसलिए ये नेगेटिव हुआ. ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? So you have to write down this fourth number point in your notebook. Okay? So I hope you all understood these points related to sentence, kinds of sentence. Okay? Read these points again and again for your better understanding. In the next lecture, we will going to start our next poem. Okay? So thank you and have a nice day.